the International Space Station? I believe it is special for every single Indian, for the entire humanity, given the number of experiments that have been conducted. And for me also as an educator, it is a big, day for me personally, because teaching all those events and occurrences and experiments that have happened in history is a different matter altogether. But to talk about the events that you see or you witness happening, when all the students around are also equally excited, makes it very interesting and easy for me to convey the entire, lecture to them. So yes, it is a big day for India, and I believe it might be just one another mission for Axiom Space as a company, but for India as such, it is the beginning of a huge journey that is going to come after this. Space shared details on the mission on its blog on Tuesday. On the app, the crew conducted microgravity research. Group Captain Shubhanshu Shukla also carried out of 7 experiments. What were those experiments? See, overall, we are, with respect to the space exploration, in a different phase altogether. Across the world, there is a growing enthusiasm for taking humans into the space, conducting multiple human-led research with respect to many applications that we can derive from it, and also with the long-term view of managing long-term planetary habitations in the space. That would require a number of researches to be conducted on what kind of food that we will be generating there, how we will be ensuring oxygen production over there, how we will be ensuring the resource utilization over this space, because it is impractical to think of taking the cargo to and fro from the Earth to that space. Towards that goal, our Shubhanshu Shukla also spearheaded 7 specific experiments. A couple of them with respect to microalgae and cyanobacteria. These are microorganisms which are capable of doing photosynthesis. Now, interestingly, I'll tell you, these microalgal species were collected from the wastewater of Delhi, were also collected from Indian Ocean waters, and also from Himalayas. These microalgal species are being tested for their potential to generate oxygen, for their potential to remove the wastage from the water, for their potential to produce medications, proteins and whatnot. So it will have far-reaching consequences on that front. Exactly similar research is also being tried out with the blue-green algae or cyanobacteria. There is another extremely important research on muscle degeneration that has been carried out. You see, in the near zero gravity condition, muscle degeneration sets in very fast. Now, if you remember when Miss Sunita Williams' stay in the space was prolonged a little bit, the biggest worry that we all had was the accelerated muscle degeneration. So one of the research that Mr. Shubhanshu Shukla has conducted as to what all inputs with respect to nutrition, or there is something called as mitochondrial boosters that we could provide to the cells so that their degeneration could be slowed down or even regeneration could be set in. That will again have a far-reaching consequence. Other than supporting the astronauts in the mission, back home, muscle degenerative diseases can also be dealt with or managed using the similar strategies. There are other researches also. Like tardigrades are the tiny organisms which are extremely resilient to the toughest of the situations, like the dry conditions, salty conditions and all. These organisms have been taken into the space and they are being subjected to the microgravity radiation environment, and we will see which genes in their body are expressing, and based on their behavior in the microgravity, we will utilize it for generating better organisms on the planet also. They are also conducting research on sprouting germination of seeds like methi and moong, which is fenugreek and the green gram. Both are very popular sprouts that we consume here in the microgreens also. They have been germinated over there. We'll bring them back home. We'll cultivate it for generations to see how microgravity is impacting their gene expressions, changing their nutrient value, and so on. Similarly, one Kerala University mediated experiment, they have carried the seeds of some of the plants like rice, tomato. All these plant seeds are also subjected to microgravity, and they would also be brought back and cultivated to see the similar changes. All in all these researches have far-reaching consequences, and also setting the tone for upcoming missions like Gaganya, where we would also be planning to conduct similar experiments. Now, other than this, you see, the other agencies are also conducting many useful experiments with respect to cancer research, bone and radiation impact on that research, and then
glucose sensitivity to the body under insulin production research. So there are many researches which this particular mission would be known for, and I believe that way this mission has to be celebrated overall. क्योंकि सुधांशु शुक्ला आज गए हुए थे ग्रुप कैप्टन और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार XCM-4 चालक दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद प्रशांत महासागर में उतरे हैं। कितना खास है आज का दिन? निसंदेह ऐतिहासिक, जैसा कि आपने कहा, हम पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व के हिसाब से भी अगर देखें तो जिस तरीके के अनुसंधान इन 18 दिनों में किए गए हैं, इनका आने वाले भविष्य में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे लिए इसलिए भी और खास है भारतवर्ष वासियों के लिए, क्योंकि 41 साल के इंतजार के बाद ये महज दूसरे भारतीय थे, और इस बार सिर्फ एक भारतीय को नहीं भेजा हमने, बल्कि हमने इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो शुभांशु शुक्ला के द्वारा किए गए कई ऐसे अनुसंधान हैं जो हमारे लिए आगे आने वाले मानव स्पेस मिशंस के लिए बहुत ही प्रेरक बनेंगे, और इनमें निकले जाने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे हमें, उनसे भी आगे के और भी कई सारे ऐसे अनुसंधान करने की प्रेरणा भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। तो उस हिसाब से भी देखें तो हमारे लिए ये एक जर्नी का एंड होना नहीं, बिल्कुल एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत है। और अच्छी बात यह है कि हमने इसकी शुरुआत बड़ी ठोस कदम से रखी है। पर ब्लॉग साझा किया है, पर चालक दल ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान का आयोजन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने भी कई प्रयोग किए। क्या ये कुछ खास प्रयोग थे? बहुत ही खास प्रयोग थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हाल के समय में, लगभग पिछले कुछ एक सालों में, मानव स्पेस मिशंस का प्रचलन बढ़ा है। जैसे जैसे तकनीक और अच्छी होती गई है, तो अब हम दूरगामी सोच ये भी रखते हैं कि कैसे मानव के प्रवास को और लंबे समय के लिए हम सुनिश्चित कर पाएं। ऐसा करने के लिए हमें कई और सारे अनुसंधान करने पड़ेंगे, जिनमें वहां हम भोजन क्या करेंगे, वहां कौन सी दवाओं की जरूरत पड़ेगी, वहां ऑक्सीजन कैसे हम जनरेट करेंगे। तो इस तरीके के सवालों के उत्तर इसमें किए गए अनुसंधानों में हमें प्राप्त होगा। जैसे कि सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये नॉर्मल हमारे आसपास पड़े पानी में, जल में मिलते हैं, और उसी माइक्रो एल्गी को हमने अलग अलग स्रोतों से भारत में उठाया है। जैसे कि दिल्ली के वेस्ट वाटर से उठाया है, फिर हमने भारतीय महासागर से उठाया है, और हिमालय से उठाया है, और इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया जो है, इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं अपने द्वारा, और ऑयल की भी व्यवस्था कर सकते हैं, इनसे दवाएं भी बन सकती हैं। तो इनको वहां ले जाकर ये जांचा गया है कि माइक्रो ग्रेविटी के कंडीशन में और रेडिएशंस के कंडीशंस में कैसे इनके द्वारा हम वहां लंबे समय तक रहने को सुनिश्चित कर सकते हैं। इनसे हम भोजन जनरेट करवा सकते हैं, इनसे ऑक्सीजन हम जनरेट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च हमने वहां पर किया है। दूसरा, अगर हम देखें तो लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में रहने से मांसपेशियों का क्षरण बहुत होता है, और इस मांसपेशियों के क्षरण से वहां पर रहना लगभग असंभव है एक समय से ज्यादा। अगर आपको याद हो, जब हमारी भारतीय मूल की ही सुनीता विलियम्स जब पिछली बारी वहां कुछ दिनों तक वहां फंस गई थी, वो उनका वापसी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके मांसपेशियों में जो अब क्षरण हो रहा है, उससे उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा न हो, इसके लिए भी एक अनुसंधान किया गया है शुभांशु शुक्ला जी द्वारा, जिसमें हमने ये जांचा है कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन हैं, जिनके मौजूदगी से मसल्स, मांसपेशियों के क्षरण में हम स्लो कर सकते हैं या धीमा कर सकते हैं, या हो सकता है कि उनका जनन भी हम सुनिश्चित कर सकें। तो ये न सिर्फ स्पेस यात्रियों के लिए आगे वाले भविष्य में सहयोगी होगा, बल्कि आप देखें कि मांसपेशियों का क्षरण कई ऐसे रोगों में भी होता है धरती पर, या फिर उम्र के होने से भी मांसपेशियां गलने लगती हैं धीरे धीरे। तो क्या हम ऐसे ही अनुसंधान से एजिंग, उम्र बढ़ने की समस्या को भी हम डील कर सकते हैं? क्या हम ऐसे रोगों से भी निपटने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना व्यापक जो है महत्व है। इसके साथ साथ हमने वहां पर कई बीजों का अंकुरण भी किया है, खास करके मेथी और मूंग, जो कि अक्सर हमारे घरों में सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अंकुरण। तो इनका अंकुरण वहां करके हमने ये जांचने की कोशिश करी है कि माइक्रोग्रेविटी, कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में, कि इनके न्यूट्रिशन, इनका जो पोषक तत्व है, उसमें क्या अंतर आता है, और उनको वापस लाया जाएगा।
और धरती पर लगभग कुछ जनरेशंस तक उनको उगाया जाएगा। कई वंश तक उनको उगाने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वहां पर आने वाले परिवर्तन स्थायी हैं या कुछ समय तक के लिए ही हैं, और उन परिवर्तन को स्टडी करके हम अपने एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में, कृषि में भी कई सारे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से राइस, जो धान की एक प्रजाति, टमाटर की एक प्रजाति, बैंगन की एक प्रजाति, इन सब की प्रजाति के बीज वहां लिए गए थे, और उन बीजों को अब लाने के बाद वापस से यहां हम खेतों में उनका रोपण करेंगे और देखेंगे कि वहां पर उनपे क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो वहां पर आपके आंखों का मूवमेंट जो है वो धीमा पड़ जाता है। तो जो हम डिजिटल स्क्रीन यूज करते हैं, तो माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में, स्ट्रेस की अवस्था में कैसे हमारे किसी आंखों का किसी सही जगह पर फोकस करना और तुरंत फोकस का दूसरी जगह केंद्रित करना कितने अच्छे से हो पा रहा है, और उसको स्टडी करके हम और अच्छे, जिसको हम इंटुइटिव इंटरफेसेस कहते हैं, वो बना सकते हैं। जो भी स्पेस यात्री के साथ साथ धरती में भी कई जगह पर ऐसे, जैसे डॉक्टर अगर कोई रोबोटिक सर्जरी यूज कर रहा है तो उसको स्क्रीन में मैनेज करना है, तो कई और सारे ऐसे उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सारे प्रयोग जो हैं, सारे अनुसंधान आने वाले भविष्य में कई और नए खोज करने की काबिलियत रखते हैं, और आने वाले और कई मिशंस में, जैसे कि गगनयान जो होने वाला है, उसके लिए भी दिशा निर्धारण का काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मिशन खास करके इन वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण भी जाना चाहिए। Sir, how was the mission under the mission? You see, this entire return journey, as you know, has taken around 22.5 hours. Many people had the question that could it not have been conducted a little earlier? Earlier, obviously yes, but the risk factor would have been slightly higher. I would not say it was risky, because Axiom 4 was the fourth mission in that particular series, and all these human missions take care of the safety precautions much before conducting these missions. Despite that, there were few moments in the entire return journey that were a bit tricky, I would say. As to why did it take 22.5 hours? Because the movement of the Dragon capsule had to be made oriented into an elliptical path in such a manner that its entry into the Earth's atmosphere happens at a certain angle. If that angle is not achieved, maybe your Dragon capsule will fall vertically through. If that happens, it will have a crashing impact on the splashdown, which will have a very disturbing impact on the body of the astronauts. But if the angle is a little too much, have you ever visualized when you throw the stone onto the water surface at an angle, they do a multiple pop-up on the water surface itself? That would have occurred. To get to that precise angle meant that you had to get to that orbit by burning the fuel gradually, and that took time. Another moment of trick was when your Dragon capsule enters into the atmosphere. Because when it enters into the atmosphere, there is a huge friction that it has to face. That friction creates a lot of ions created all around, which is called as plasma. And because of that ion layer around the Dragon capsule, that 6 to 7 minutes of the time, you completely lose the communication with the Dragon capsule. So you just, don't talk to the people there. You just have no connect with them. It's a blind journey that happens. So that is a bit tricky moment, I would say. But given that the mathematics of the movement is taken care of earlier, that also happens smoothly. Once it enters, then it's just a matter of slowing down the speed, assisted by the ejection of the parachutes. 2 parachutes first, and then as it enters into the denser layer, 4 parachutes are shot out. That also ensure that it is happening at a slow enough pace for this splashdown. All in all, the re-entry phase is the most important, for which we did the required firings to slow it down. There are heat shield around the surface to keep it, well protected, because the temperature reaches over 16 to 1700 degrees. But all well that ends well. So